Today is Friday, 22nd August, and this is the oral test of the last week's current affairs. All right, Bolsonaro is a politician of which country? Manisha? So Venezuela. Prasoon? Brazil. Brazil, sorry. Maduro is from which country? Politician? Vidhi? So Venezuela. Methi River flows through which city? Methi River? Prasoon? Mumbai. Okay. What is the reservation for women, SCs and STs in multi-state cooperative societies? Jamshed? Sir, 2 for women and 1 for SC or ST. 1 for SC और ST. अब अखबार में लैंग्वेज मतलब इसको कॉन्स्टिट्यूशन से क्लियर करना. ओके, बाय दिस लैंग्वेज इट कैन मीन कि it is either SC or ST but not for both. Look up this article in Constitution and see what is the reservation. Which country has the largest share in textiles exports globally? Vidhi? China. China. In fact, all these countries, like for all products, China only was the largest exporter. Okay, the only difference is in the percentage share of China, but China is the largest exporter in all these categories: textiles, footwear, metals, chemicals, machine, electrical equipment. Like you name anything, China will be the largest player, largest exporter if you don't have a specific idea about that category. Unless it is clearly mentioned that India holds a dominant share, until it is mentioned like that, it will be most likely China only. If you have to take a guess, go for China. Okay. US के अराउंड अब क्वेश्चन बनता है डेडिकेटेड इंडिया यूएस ट्रेड के ऊपर भी क्वेश्चन बन सकता है कि व्हाट आर द कमोडिटीज in which US has a big share, has a dominant share. What export commodities of India are there in which US has a dominant share? ये prepare करना. And overall जो global exports हैं उसमें इंडिया का शेयर किस कमोडिटी में कंपैरेटिवली सबसे ज्यादा है अमंगस्ट इंडिया ओनली. ठीक है ना? Whatever commodities India exports globally, in those commodities, in which commodity India has the largest relative share? Do you get it? It's not in comparison with other countries. It's amongst the commodities which India only is exporting. In which commodity India has relatively the largest share globally in global exports. Okay, ये देख लेना. चाइना के साथ भी ट्रेड चलता ही है. डेफिसिट है इंडिया का. किस कैटेगरी में सबसे ज्यादा डेफिसिट है ये पता होना चाहिए. ठीक है, परसेंटेज उसका कितना, डेफिसिट का कितना परसेंट है उस एक सिंगल कमोडिटी का. यूएस के साथ सिमिलरली, यूएस के साथ इंडिया का ट्रेड सरप्लस है. किस कैटेगरी में सबसे ज्यादा ट्रेड सरप्लस है? ओके, व्हाट इज द शेयर ऑफ दैट कैटेगरी इन टोटल ट्रेड सरप्लस बिटवीन यूएस एंड इंडिया? स्टंटिंग के ऊपर क्या खबर थी? हाउ इज इंडिया परफॉर्मिंग इन चाइल्ड स्टंटिंग? Akshay? So the stunting has declined by 2% from 14% to 12%, sir. So it is better now, sir, as compared to NFHS.
Okay, it is better now, but the article says India's persistent stunting crisis, and it shows June 2025 Poshan figures are actually increasing. For stunting in children less than 5 years across India, about 35% children were stunted in 2019-2021 NFHS, which is NFHS 5. And as per the Poshan figures, now this 35% has increased to 37%. So it has worsened, not improved. Okay. Which state has the largest children? When we talk of children stunted, we are talking of children under 5. Which state has the largest share of total stunted children in India? Sarvana? UP, sir. UP. How much percent of total stunted children? Okay, I can't, Almost I can't half. understand. Okay. No, wait, this is 48. This should not be percent then. It's not adding up to 100. UP, Jharkhand, and some other state is top This 3. is not, should not be percent. Statewide share of children. Data analyzed only for largest state. 48.8 should not be percent then. It's not adding up to 100. But in any case, even if percentage is not given, UP has the largest share Okay. of stunted children. After UP, which state? Jharkhand and Assam. Jharkhand and Assam. Okay. Which factor is the biggest one to cause stunting? Most important factor, Manisha? Sir, anemia in children between 6 to 60 months, 59 months. Yes, so anemia in children, and the next biggest factor will be I'm not able to recollect. maternal related. Top 3 factors will be anemia in children, which is the single most important factor. After that, you have exclusive breastfeeding, and after that, you have anemia in mothers. Okay. So the sequence of factors is not important. You just need to know the most important factor, which is anemia. If UPSC goes into specifics, it will be anemia in children and not anemia in mothers. But anemia in mothers is one of the top 3 factors. Okay. So if at all you can remember, go for anemia in children. Otherwise, anemia and breastfeeding are the main culprits. Will the center or the state approve the sub-schedule caste reservation? The sub-schedule caste reservation, will the center approve or the states approve? Vidhi? The states. The states will approve. Okay. अब ये कॉन्स्टिट्यूशन का थोड़ा देखना. In terms of constitution, the schedule castes lists, schedule caste, schedule tribe, OBCs lists, who makes, center makes, state makes, who has the authority, who can, how it is made, how it is edited. All of these details are given in your constitution, article 338, 330, in those lines. Okay, after 335 are the articles related to this. So just see those articles. Which is the largest crocodilian species? Akshay, So the saltwater crocodile, sir. do we have saltwater crocodiles in India? Yes, okay. Recently, there was an article about their population in Sundarbans Biosphere Reserve. Did the population increase or decrease? It increased, yes. Okay.
And what is the IUCN status of saltwater crocodile? Prasoon? I believe it's critically endangered. Is it critically endangered? Just एक बार देख लेना, because critically endangered is a big thing. I was actually not expecting it to be critically endangered. नहीं तो यहाँ मेंशन हो जाता आर्टिकल में. पता कर लेना एक बार. Just see. Because critically endangered are the most important. You don't need to know IUCN status of random species. You just need to know that a species is not critically endangered. Okay, you don't need to know other status. And the species which are critically endangered, those you need to know. And for random species, you just need to know they are not least concern है. ठीक है ना? देखो, I told you, had it been critically endangered, so that would have been highlighted for sure. ठीक है ना? Okay, this ethanol blending is coming in new. So again, problem of people are saying इंजन में प्रॉब्लम हो रही है, एफिशिएंसी एंड मेंटेनेंस कॉस्ट आर राइजिंग, इंजन खराब हो रहा है, व्हाटएवर. तो इथेनॉल ब्लेंडिंग के ऊपर अब क्वेश्चन बनता है. पिछले साल भी काफी इशू था ये. क्वेश्चन बनेगा, नाउ दे आर नॉट गोइंग टू आस्क द बेसिक डिटेल, C20 का टारगेट क्या है, 25 का टारगेट क्या है, व्हाटएवर. दे आर नॉट गोइंग टू आस्क दैट. दे आर गोइंग टू get into the details about molasses, B heavy molasses, C heavy molasses, कौन सा वाला यूज होता है इसके प्रोडक्शन में. ठीक है. एंड अदर डिटेल्स लाइक octane number and calorific value, ethanol versus crude oil, normal fossil wala. So details like these will be asked. You will get questions, most likely multi-statement question, similar to the questions asked on PM 2.5. And annual average as per WHO is XYZ micro grams per meter cube, whatever. So those kind of figures will be asked, and that's why like these details are important. So tell me about the difference between B heavy and C heavy molasses. What is the difference, Manisha? So C heavy molasses is the final byproduct from the process, whereas B heavy is the intermediate stage. Okay. And B heavy has a higher content also, the molasses content. Molasses content will be higher because it is intermediate. And but here it is not clearly mentioning that whether B and C both are used or only C is used. Isko you'll have to figure this out. Okay, just find out. What about calorific value? Ethanol versus petrol, calorific value and octane number, higher or lower? Which one has higher, which one has lower? Sarvana? Ethanol has lower calorific value than petrol and a higher octane number than petrol. Does any country in the world use more than E20, 20% blending? Presume? So Brazil uses 27%. 27%. Now this is not important कि 27% है कि कितना है, वो तो तुम्हारे just reference के लिए है. Just in case tomorrow UPSC gives a random figure like 50% or 60%, just like it gave in ये वाला यूरेनियम वाला क्वेश्चन जो है, मिनिमम 60% प्रोसेसिंग इज नीडेड फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी वाला है ना. मैक्सिमम करके दे देगा, मैक्सिमम इथेनॉल ब्लेंडिंग इन द वर्ल्ड इज 60% ऐसे करके. तो 27 का तो हमको यही फिगर मिल गया, 20 पे हम खुद हैं, 27 का यहाँ फिगर मिल गया, 30 की ये लोग बात कर रहे थे कि 30 तक पहुंचाएंगे. एक बार ये देख लेना कि मैक्सिमम कितने परसेंट तक दुनिया में मिला हुआ है. अब ब्राजील इज वन ऑफ द लीडर्स, तो आई थिंक इट शुड बी अराउंड दिस ओनली, नॉट वेरी
distant from this number 27-30 odd %. ठीक है? Okay. How many are the nominated members in states with legislative councils? How many nominated members are there? Jamshed? So 1/6. 1/5? Sixth. 1/6. 1/6. Who nominates them? The governor on the advice of Council of Ministers. Okay. And how many states have legislative councils? 6. Very good. What about union territories? Now the statement is all union territories in India have some nominated members. Wrong. Okay. Which one does not have? Which union territory Delhi. does? Delhi does not have. Good. Okay. Now this doesn't mean others have. यहाँ पे सिर्फ दिल्ली, पुडुचेरी, J&K का mention था, तो दिल्ली में नहीं है. UPSC doesn't care about whether you remember the UTs which have nominated or not. It will just give you blanket statement and will try to confuse you with some nominated members और ऐसे करके दे देगा all लगा के आगे. ठीक है? तो किस में नहीं है या किस किस में नहीं है ये देख सकते हो. Whatever is the lower figure. If lower number of UTs have nominated members तो वो पता होना चाहिए. जहां तक मेरा guess है, more number of UTs will have nominated members, so lesser number will not have. So just see if there is any other UT other than Delhi regarding nominated members. EJIAO, EJIAO, EJIAO क्या चीज है विधि? It's a Chinese traditional medicine made Why out was of a made out of? donkey. डोंकी का कुछ तो इसमें यूज होता है एंड डोंकी को बहुत इसीलिए पॉपुलेशन का प्रॉब्लम आ रहा है. ठीक है? मार देते हैं डोंकीज को. How has yes? So I think it was hides, equine hides. So it's That doesn't matter. It will be very random. If a question comes, it will be a one statement question. EJIAO refers to which of the following? एक ट्रेडिशनल मेडिसिन दे देगा, एक कुछ बहुत दूर दूर ऑप्शन दे, कोई वेपन का नाम दे देगा, कुछ और दे देगा. ठीक है? कोई डिजीज दे देगा. You don't need to know. Just need to know it is traditional medicine and somehow related to donkey and ये Chinese traditional medicine. बस इतना ही, जरूरत से ज्यादा ही है. Okay. How has India performed on hunger, undernourishment? How has India performed in undernourishment? Prasu? So we've reduced it from 14% to 12% in the, I think, from 2020 to 22 and 22 to 24. 14% is not important. You just need to know that here the latest figures we have is, latest figure is 12%, around 24 का. और reduction हुआ है, तो this was a positive article. ध्यान रहे, बात अंडर नरिशमेंट की हो रही है. ठीक है? What % of India's plastic waste gets recycled?
जमशेद? 30%. India has banned all the single-use plastic items. True or false? True or false बता दो. True is thumbs up, false is face emoji. False, okay. Most of the plastic produced globally is short-lived. True or false? Most of the plastic produced globally is short-lived. Why is it false, Aniket? So plastics are usually long-lasting and they are non-biodegradable. That is why they persist in Then the why environment. is this not stupidly simple in that case? So because generally we are told that plastic material exists even after 500 years. That is why we won't call it short-lived. So that is why it Actually, should be that, and from that front, the statement should be stupidly simple. Does it make sense to ask this statement if such basic reason is there for negating the statement? Then it should not be asked. ना 5th class के बच्चे को भी यही बात पता होती है, right? If it is asked, so if you find yourself using the same logic which a 5th class student also will use, then there is some गड़बड़ in the statement. फिर तो वो statement worth ही नहीं है पूछने के, if that is really how it has to be thought about, है ना? तो stupidly simple हो जाएगा फिर तो हाँ, फिर तो ट्रू होना चाहिए उस हिसाब से. अगर नॉर्मल उस अप्रोच से अगर फॉल्स आ रहा है तो उसका ऑपोजिट होना चाहिए फिर स्टेटमेंट में. द कॉन्सेप्ट ऑफ स्तूपा इज बुद्धिस्ट इन ओरिजिन, उसी टाइप का स्टेटमेंट बन गया है. इट्स अ फॉल्स स्टेटमेंट. कितना परसेंट है शॉर्ट लिव्ड वैसे प्रसून? I think more than 2/3. यस, मोर देन 2/3 इज शॉर्ट लिव्ड. ओके, अब ये जरूरी नहीं है मोर देन 2/3. इफ यू कैन रिमेंबर बहुत अच्छी बात है, एक कॉन्टेक्स्ट मिल जाएगा, बट इतना जरूरी नहीं है. मोस्ट अगर याद रख सको तो ठीक है, अदरवाइज ईटी से भी हो जाएगा स्टूपिडली सिंपल से. बट बात ये है जहां तक हो सके वी शुड गेट सम कॉन्टेक्स्ट जितना हो सके. ठीक है. प्लास्टिक्स contribute how much of greenhouse gas emissions? What percent? Vidhi? So it's around 3.5%. Less than 5% you can say. So it's not very high. It's not a very high percentage of global total. Okay. UPSC will say 20%, 30% of greenhouse gas emissions, something like that. Plastics के ऊपर क्वेश्चन आ रखा है, कई बार आ रखा है. डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लास्टिक्स हैव बीन मेंशन्ड इन दोस पीवाईक्यूज. बायोप्लास्टिक्स भी पूछा हुआ है. तो यू शुड एंड आई थिंक इन दी जो पीवाईक्यूज चैनल है 1979 वाला, उसमें तो मैंने किसी एक क्वेश्चन में वीडियो भी दे रखी है. डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लास्टिक, 7 मेन टाइप्स आर देयर, उनका मेन यूज, मेन डिफरेंसेस. और इन एडिशन टू दैट बायोप्लास्टिक्स के ऊपर भी थोड़ा देख लेना, बिकॉज बायोप्लास्टिक कहीं कहीं पे कभी कभी अखबार में दिख जाता है मेंशन्ड. तो बायोप्लास्टिक्स क्या होता है, क्या यूज है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल प्लास्टिक एंड बायोप्लास्टिक बिसाइड्स द ऑब्वियस वंस. ठीक है ना. तो ये वीडियो यूट्यूब पे देख लेना, गेट द क्लैरिटी. अमीबिक मेनिंजोएन्सेफलाइटिस क्या चीज है? अमीबिक मेनिंजोएन्सेफलाइटिस. Only 2 people. जय? सर डिजीज कॉज्ड बाय अमीबा, जो कि स्टेगनेंट वाटर के अंदर मिलता है. गुड. इसमें क्या होता है डिजीज में? ब्रेन के ये ठीक. इनका कौन सा इशू होता है. स्पीशीज, कौन सा स्पीशीज है इसमें प्रॉब्लमेटिक? अनिकेत? सर एक नीलगिरा फॉर्मुलेरा इस टाइप का कुछ नाम था. टूटा फूटा भी याद रहेगा वो, उतना ही बहुत है. इसका एक बार नॉर्मल नाम देख लेना, इफ इट हैज अ रेगुलर नॉर्मल इंग्लिश वाला कुछ नाम अगर हो तो. Which national park
of Assam is brain eating amoeba. नहीं, ये तो बिल्कुल ही वैसा हो गया, और नहीं है, मतलब जैसे थोड़ा और स्पीशीज के होते हैं ना नाम, एक तो साइंटिफिक नेम होता है, फिर एक थोड़ा सा सिंपल सा नाम होता है, इतना भी सिंपल नहीं, बट जैसे ये क्या होता है, हंगूल, हंगूल एक नाम हो गया, ठीक है ना, तो इसी टाइप का। Which national park of Assam is like an island? अच्छा, So Dibru Saikova. now why is this news important? Because नॉर्मली हम जो सुनते हैं जो इन्वेजिव स्पीशीज होती हैं वो फॉरेन होती हैं, अब यहाँ पे नेटिव स्पीशीज ही इन्वेसिव हो गई, ठीक है, दैट्स अ डिफरेंस। तो बताओ कौन सी नेटिव स्पीशीज थी जो इन्वेसिव हो गई? मनीषा? Sir, Bombax and some वो largest दैट्स जस्ट साइंटिफिक नेम, नॉर्मल नाम बताओ, वही पूछेगा। Simalu and Ajar. सिमालू एंड अजार, हाँ ठीक है ना। Don't worry about the technical name, they'll give it correctly only. If they give the technical name, they'll give it correctly only. Okay. Nobody can remember these things. People can remember only Simalu and Ajar. Even Simalu and Ajar also, most likely they'll give it correct only. But just to remain safe, we are going through their names. Same way, just like Simalu and Ajar, is that meningitis wala bhi, amoeba wala bhi has a name or what? So you get that this thing. What is the IUCN species of Bengal florican? IUCN क्या बोलेंगे इसको, कैटेगरी? प्रसून? This is critically endangered. I think so. I think Very so. It few is, individuals are in India. है ना? Okay, just notice the names. Babbler, swamp grass babbler. कई बार यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन दे देगा, रैंडम नेम्स, इट विल गिव 4-5 नेम्स in a one statement question and it will ask what are these insects, birds, fish, ऐसे करके दे देगा, monkeys. Okay, so वो नाम से पहचानना होता है। अब देखो बर्ड्स के, दिस वुड बी मोस्ट लाइकली अ बैबलर, ये बर्ड बैबलर हो गया। कई बार चेस्टेड नाम आ जाता है, ब्रेस्टेड नाम आ जाता है, नेक आ जाता है, ये इसमें होते हैं, यूजुअली बर्ड्स के होते हैं। तो यू डोंट नीड टू रिमेम्बर दीज जेनरिक नेम्स, बट इनके नाम में क्या टर्म्स यूज होती हैं बस वो देख लो। बिल नाम जो है, स्पून बिल और वो सैंड बिल और वो इस तरह के बिल नाम बर्ड्स में होता है। बिल तो वो चोंच को ही बिल बोलते हैं, ठीक है, तो बस वो देखना है, अदरवाइज यू डोंट नीड टू रिमेम्बर एनीथिंग। व्हाटएवर इज क्रिटिकली एंडेंजर्ड, बस वो इंपॉर्टेंट होता है। वेयर इज ऊझ रिवर? ऊझ रिवर रसून? Kathua, Jammu and Kashmir. Which core is there in Kathua? जय? The Rising Star. राइजिंग स्टार। तो ये तीसरी कोर आ गई J&K से। व्हाइट नाइट पड़ा था, एक चिनार पड़ा था, ये तीसरी कोर है, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज अभी यूपीएससी रैंडम पूछने लग गया है। वो ईडी वाला क्वेश्चन पूछ लिया था अभी 25 में 2025, उससे पिछले साल वो कर्नल जनरल वाला क्वेश्चन पूछ लिया, तीनों फोर्सेस के रैंक्स का कंपैरिजन पूछ लिया। तो अब ये कसर बची हुई है कि कोर के नाम दे देगा कई सारे, 4-5, उसमें से पूछ लेगा हाउ मेनी ऑफ दीज आर ऑपरेशनल इन J&K, और ये बहुत न्यूज में रहते हैं, ठीक है। हालांकि ये क्वेश्चन ऑप्शंस एनालिसिस से बेस्ट सॉल्व होगा, लेकिन जितना पता लगा सको उतना ठीक है। ओके, when did ethanol blending begin in India? Ethanol blending program, when did it begin, Manisha? Sir, 2014. So 2014 it was just 1.5%. नहीं, begin जो था
it will not be 2014. No, it was prior to 2014 because 1.5% was already being mixed. So you need to know which year did it begin. Okay, and but it was very less until 2014, and then suddenly it got a boost. Now it is 20%, and यहाँ पे जो how much of total sugar output is used for ethanol blending program? Manisha? Around 9%, 9 to 10%. 10% you can say. Okay, so about 10% of sugar output is being used for this. And how much of India's land is degraded? Prasoon? 30%. 30% of India's land, not agricultural land. 30% of India's land is degraded. It's a big figure. ठीक है? Are we self-sufficient in corn? CORN. The statement UPSC will give is India is self-sufficient in corn. Or India does not import corn. Let it be more specific. India does not import corn. False. ठीक है ना? अभी हो गया था डाइवर्शन, कॉर्न को डाइवर्ट करने की वजह से. इनफैक्ट कॉर्न का 34%, मोर देन 30% ऑफ कॉर्न आउटपुट इज बीइंग यूज्ड फॉर इथेनॉल ब्लेंडिंग. तो इसकी वजह से बोल रहा है कि इंपोर्ट करना पड़ गया था. तो इसका मतलब सेल्फ सफिशिएंसी खत्म हो गई थी कॉर्न की. अब इसको कई तरीके से पूछ सकता है. बोल देगा इंडिया हैज बीन सेल्फ सफिशिएंट इन कॉर्न इन द लास्ट 5 years, ऐसे करके बोल दे, या इंडिया डज नॉट इंपोर्ट कॉर्न करके बोल दे. मल्टीपल वेज आर देयर. How much of sugar cane का, एक सेकेंड, sugar cane का production, okay, right now 10% and it's expected to go to almost 20-25% by 2034. This figure is not important, only for your mains you can use it. India has been amongst the fastest electric vehicle adopting countries. True or false? India is amongst the fastest electric. ये false है. लिखा है adoption of EV has been much slower in India when compared to other large economies. It has been much slower. Tone is negative. ठीक है. EV एक अलग ही कैटेगरी है, उसके ऊपर एक डेडिकेटेड क्वेश्चन बन सकता है, कई एंगल से क्वेश्चन बन जाएगा. EV का शेयर कौन से टाइप के व्हीकल का शेयर है, 3 व्हीलर 4 व्हीलर, एक ये एंगल हो सकता है. पैसेंजर व्हीकल है कि पर्सनल व्हीकल है, उस टाइप का एक क्वेश्चन बन सकता है. EV का अपना एक कैटेगरी है. Which is India's largest car making company? Vidhi? The Maruti Suzuki. Maruti. Where is Kanakale province? Kanakale province. Prasoon? Turkey. Turkey. Why was it in news? Wildfires. How many universities are there in India? Aksha? There are around 1,100 universities, sir. Around 1,000 universities. How many colleges are there? 45,000 colleges, sir. How many children go for higher education annually?
around 8 to 10 lakhs, sir. Fine, that's it. That's it in today's class.